आपको समझ के लिखना पड़ेगा। मैं जैसा बोल रहा हूं उसका अर्थ समझ के लिखना पड़ेगा। तो कभी कभी कोट शब्द बोल देते थे, बड़ा गंभीर श्लोक, तो उसको समझने के लिए उनको जरा समय लगता था, दूसरा श्लोक बना देते थे। इस प्रकार 1,00,000 श्लोकों का महाभारत बना है। तो जय मुदीर, इसका नाम है जय का। तो उसकी संरचना वहां हुई और उसके बाद में फिर इसको पढ़ाएं किसको, इस काव्य को, इस ग्रंथ को, देवी भागवत को, पुराण को मैंने सब पढ़ा दिए शिव जी को, और ये दिव्य भव्य नव्य जो रचना है इसको किसको पढ़ाएं। तो उस समय उनके मन में हुआ कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो बेटे को चीज पढ़ाते। तो जब तटक दंपति को देखा कि जैसे कैसे कल्लोल कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने फिर परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी का अनुष्ठान किया। माँ मुझे पुत्र दे, पुत्रात् शिष्यात् पराधीन कामी। हमारे शास्त्रों में वर्णन है किसी से हम हारे नहीं, पर पुत्र से और शिष्य से हार गया, मतलब हमसे ज्ञान ना। तो यहाँ से फिर ये कथा शुरू होती है सुखदेव जीवन की। So we had already heard how right from Paramba Jagadamba in half slok it came to Vishnu ji, then from Vishnu ji in 4 slokas it went to Brahma ji. Brahma ji then passed it on to Narad ji, his Manas Putra, and then it went to Ved Vyas. And then we have heard also that Ved Vyas ji had given the knowledge of all these texts to 3 people. His dear disciple Sudev ji, Suji, and then to his son Sukhdev ji, and last of all Raja Janmejay. So to Suji he had taught all the Puranas. And then we have also heard how he was stationed in Naimisharanya, where he was continuously doing katha for Saunakadi rishis. Saunak and his 88,000 followers, he was continuously giving the jnana of all these texts. Now we hear how he shared the knowledge of these texts with his son Sukhdev. So after we have heard that where all these texts got written is so you have to think and speak. So Vyasji put a counter condition that yes, I will continuously dictate, but you cannot just write. Before writing, you must understand the shloka. And so what he would do, Vyasji, is that after 8, 10 shlokas, he would make one shloka which is very deep in knowledge. So that even, Ganeshji had to think for a minute, what was the real meaning of that? Good tattva, what was the hidden meaning in that? And then that will give him enough time, Vyasji, to compose. So like this, he had composed about 100,000 shlokas and so on. And so now, when he had already composed this, Vyasji one day saw a couple, a bird couple
very happy, playing with each other, with their baby. So suddenly he had this thought in his mind that I've created such a big body of wonderful literature for this humanity, but who will I teach it to? Who will propagate it to the world? So from that thought he had a desire that I wish I had a son to whom I can train, to whom I can pass on this knowledge. So then there is a long story that how he, went about trying to kind of amar katha, etc. तो महाराज एक बार उनकी इच्छा हुई मेरा भी ऐसा कोई दिव्य भव्य नव्य पुत्र हो जो इस भागवत धर्म का प्रचार करे और समाधि सुख का आनंद ले। चेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठ जागृति को वा सत्सद्विवेक। शंकराचार्य से पूछा सुख से कौन सोता है? बोल जो समाधि निष्ठ है। चेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो जागृति को वा सत्सद्विवेक। जगह कौन है जिसे सत असत का विवेक। तो ऐसे उनके मन में हुआ और उन्होंने गिरिजा से कहा भाई आज मैं भ्रमण में जा रहा हूं पर तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा क्योंकि एकाकी चले धीमान को अकेले भी विचरण करना चाहिए। ठीक है भाई। तो उधर भोलेनाथ चल दिए और उन्होंने नारद जी को प्रेरणा कर दी। नारद जी के मन में होगा चलो भाई कैलाश समय से नहीं गए तो सीधे कैलाश में पहुंची, माँ को प्रणाम किया। तो भोले बाबा कहाँ हैं? बोले कहा मैं जरा भ्रमण में जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। बोले भोले बाबू आपको अत्यंत प्यार करते हैं, क्या हुआ? क्या बात कहते हो? और लोगों ने पत्नी को बगल में बैठा उन्होंने गोद में बैठा दिया। जय शिव शंकर जय त्रिपुरारी, जय शिव शंकर जय त्रिपुरारी, जय अथ पुरुष जयति अध नारी, जय शिव शंकर जय त्रिपुरारी, जय अथ पुरुष जयति अध नारी। आध धवल तन आधा गोरा, आध उच्च कांच आध गल डोरा, आध जोग आध भोग विलासा, जय शिव शंकर जय त्रिपुरारी, जय शिव शंकर जय त्रिपुरारी, जय अथ पुरुष जय बोला अर्धनारीश्वर भगवान की जय। नारद जी से बोले माँ बोले ऐसा कोई देव है? उन्होंने बगल में बैठाया, उन्होंने अपने गोद में बैठा दिया। इतना प्रेमी। अच्छा माँ एक बात पूछो, नाराज तो नहीं होगी? है पूछो। बोले ये शिव जी जो मुंडमाल है, प्रथम अंग गौरी संग जटा में विराजे गंग मुंडमाल, ऐसा बड़ा सुंदर भजन है। तो ये मुंडमाल क्यों पहनते हैं? कभी आपने पूछा? तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। हम तो निरंतर उनकी प्रेम सुधा में डूबे रहते, छके रहते। अरे ज्ञान करना है, मुंडमाल क्या जरूरत है? ये सही बढ़िया माला है तो मैं आपने नहीं बोले, ध्यान ही नहीं किया। तो अब पूछ लेना। ऐसे बिना उठाई चल दी। अब सायंकाल भोले बाबा आए, उन्होंने कहा आसन बिछाया, उनको जलपान कराया, आरती की। तो महाराज एक बात पूछी है, क्यों इतने साल से शांत रहते कभी नहीं पूछा? क्या नारद तो नहीं आया था? आए थे। तो क्या पूछ रही हो? ये आप मंडमाल क्यों? इसकी विषय सब कुछ पूछो पर ये मुंडमाल हम क्यों पहनते हैं ये मत पूछो। तो फिर नारी हट है ना, बाल हट, क्रिया हट, योग हट, कि नहीं राजा का हट, ये 4 हट माने प्रसिद्ध है। बोले महाराज भोजन नहीं बनेगा घर में तो गृहिणी का ही साम्राज्य है ना, बस कुछ नहीं, भोजन नहीं, मेरे को बताना पड़ेगा। मेरे को ध्यान ही नहीं गया तो नारद अच्छा हुआ मेरे को ये बोले यही तो गड़बड़ कर देता है नारद तो बहुत अनुनय विनय की अंत में भगवान शिव का पर नहीं मानोगी तो बैठो, ये खोपड़ियां नहीं, ये तेरी खोपड़ियां। अच्छा माने मेरी खोपड़ी? आप बार बार शरीर धारण करती हो, छोड़ देती हो, तो तुमसे मैं अत्यंत प्रेम करता हूं, इसलिए ये मुंडमाल माने खोपड़ी हृदय में लगाता हूं। आपसे नहीं छोड़ दे। बोले अजर अमर हूं, अमर कथा जानता हूं। तो
महाराज ऐसा करो ना, मेरे को भी अमर कथा सुनाइए, कहीं है कि माला आपकी लंबी न हो जाए, घिसटते न चली जाए। तो भी इसके लिए बड़ा एकांत चाहिए, 12 साल का कोर्स है, एकांत चाहिए आपके और हमारे अलावा दूसरे। तब फिर अमरनाथ गुफा है कि नहीं, वहां फिर ले गए, वहां जाकर के उन्होंने प्राणायाम विरोध कर दिया ऑक्सीजन का, तो सारे उसमें पक्षी थे जो भी थे बाहर निकल आए। अब केवल शिवजी और पार्वती रह गए और शिवजी में ध्यान किया है कि नहीं। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की, मतलब अर्धनिमेष, भीतर डुबकी लगा रहे हैं, बाहर प्रवचन कर रहे हैं। पुनि मन बाहर की न रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनय भी। तो कथा से शुरू हो जाती है। अब आगे क्या होता है बताइए जी। सुखदेव की उत्पत्ति जी जी। So we are now, the katha is about how Sukdev ji was born to Vyasdev ji. So the story starts at Kailash Parvat, where Shivji lives along with his partner Parvati. And one day Shivji decided that he will go out alone for the day and he'll return by the evening. And while Parvati ji was alone, Shivji had inspired Narad to visit. So when he is away, Narad ji comes as usual, playing his Dev Dattaveena, etc. And he asks, Mother, how are you? Where is Lord Shiv? He's gone out. He said, does he really love you? He said, of course, he loves me. Is that any question? He loves me more than his own life. Achha. So, have you ever asked him why he wears that mundamal around his neck? You know all that Shivji wears a mala of the skull. No, I have never asked him. The question has never arisen. He said, oh, I see. So today when he comes, please ask him that why does he wear this, mundamal. If he answers you honestly, then I'm sure he loves you. But if he evades the question, then there could be some, scope for doubt. So he's put a doubt in her mind, he takes leave and gone. So now in the evening, Shivji returns and Parvati, as was the tradition, takes care of him, does arti and so on. But that question is bothering her. So very quickly she says, Lord, can I ask you a question? So Lord Shiv immediately says, you have never asked me any question. You have never questioned me. There was no doubt in your mind ever about me. Suddenly in all these years that you have lived with me, now you are asking me a question. Did Narad come here? Because Narad ji has a reputation of creating little khatpats, as you know. So, in a nice way. So he said, did Narad ji? Yes, he came. Oh, I see. Okay, ask your question. He says that, you wear this mundamal. Can you tell me why you wear this mundamal and whose skulls are these? Shivji again suddenly becomes very defensive. He says, no, I can answer any question, but that question I will not answer. It's Gupt. Now, Parvati's doubts are confirmed that there is something wrong. And she goes into what I'm sure most men would have experienced during their time. Nari Hut. Nari Hut is when, they stop cooperating. Nari, in this case, would be your wife, and you won't get a breakfast. and things, the rest of the things. So even Shiva cannot deal with that. So after some time,
immortal, so I live forever in eternity. Whereas your body comes to me, I love you so much that every time you die, I take your skull and wear it next to my heart. So all these are your skulls from your various previous lives. So now Parvati ji says that, look, at this rate, this mala will become so long, it will fall on the ground. So why don't you also teach me the knowledge by which I can also live eternally? So Shivji says that that's a 12-year course. It's a Amar Katha. It's a 12-year course, and during that 12 years, nobody else can be there. You cannot sleep even for a minute. If you sleep, then the deal is off. So, to quickly, they go to Amarnath Gufa. And Amarnath Gufa exists till this day. It is somewhere in the state of Kashmir. And there, Lord Shiva, with the power of his yogic powers, he sucks out all the oxygen from the atmosphere of the Gufa. So there is supposed to be no living creature. Even the creepy crawlies would not survive. So he thinks now only he and Parvati are there. And they begin this Katha, Amar Katha, which is for 12 years. But he has put the condition that if you have to be awake every moment of this 12 years, if you sleep, then I'll stop the Katha and the deal is off. तो महाराज कथा शुरू होगी। हरि ही रामचरित सवाए पुलक प्रकट लोचन जल छाए। जब हम बहुत आनंद प्रभु के आनंद में भजन करते हैं, शरीर रोमांचित हो जाता है, आंखों से जल आता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जय जय विघ्न हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरन। बोले जगदम्बे मैया की। हमें भक्ति आ गई कैसे जाने? मम गुण गावत पुलक जी, शरीर पुलकित हो जाए, गदगद गिरा, पानी अवरुद्ध हो जाए, नैन बह दिया, आंखों से जल बरस जाए। भगवान कहते हैं भाई तो गंगा जल से मुझे नहलाओ, शास्त्र कहता ठीक है, पर नैन गंगा से जो मुझे नहला, क्योंकि मैं तो हृदय यहाँ बैठा हूं, नैन गंगा बहेगी, यहाँ स्नान हो जाएगा। तो मम गुण गावत, भगवान ने हृदय से अर्जुन पृष्ठ दी, रामयन सर्वभूतानि यंतारूढ़ानि माया। मैं तो आपके हृदय में हूं, और नैन गंगा जब बहेगी उनके प्रेम में, तब फिर मैं आह्लादित हो जाता हूं। तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। तो महाराज जैसे ही ध्यान करने लगे तो एकदम समाधि में जाए तो कथा कौन करेगा? थोड़े नेत्र खोले, है कि हरि ही रामचरित सवाए पुलक प्रकट लोचन जल छाए, मगन ध्यान रस दंड जो। 48 मिनट तक तो कुछ बोले ही नहीं, अढ़ाई दंड का मतलब 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। तो मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित भरन लीन। तो सदा समाधि में रहते हैं, लेकिन अब कथा सुनानी है, मैं समाधि में चला जाऊंगा, इसको कौन सुना? 12 साल का कोर्स है। तो फिर बाहर मन को निकाला, नहीं तो अंदर डूब गया तो कहाँ जाएगा? फिर मन अमना हो जाता है, वहां मन रहता ही नहीं। ऐसी योगी लोगों के स्थिति। तो पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश सब हर्षित भरन लीन। आखिर अब 2 लोग हैं तो उसमें फिर एक को हुंकारी देनी पड़ती है ना। हाँ, पहले पहाड़ों में ना भट खाते थे हम लोग, तो सुनाते थे, करते थे। उसमें ऐसे साधन नहीं थे, टीवी वीवी कुछ नहीं था, रेडियो भी मुश्किल से होता था। तो भट बूटे, हमारे यहाँ एक दाल होती है, बूटे उसको खाते रहे और कथा सुनाते रहे। तो ऐसे ही भगवान श्याम के भगवान शिव जो है बड़े शांत भाव से उस
कथा को सुनाने के, लेकिन दो जब कथा कहेंगे एक को हुंकारी देनी पड़ती है। अब तो महाराज कथा शुरू हो गई। अब भगवान जो है ध्यानस्थ होकर के थोड़े थोड़ी नेत्र खुले हैं, लेकिन मन कथा में डूबा हुआ है, हमारे कथा में अब बोलने लगे। और इधर हुंकारी जो है माँ देवी, पर हुआ क्या कि 2.5 साल बाद माँ को भी नींद आ गई। बोले जब नींद कथा में बहुत ज्यादा आती है। एक सेठी से पूछा ब्यास जी ने, महाराज कथा कैसी रही? बोले महाराज बड़ा आनंद आ गया। क्या हुआ? बोले जो नींद इंजेक्शन से गोलियों से नहीं आ रही थी, आपकी कथा से आ गई। क्योंकि रिलैक्स हो जाता है, तो कथा से नींद भी बड़ी सुंदर